भारत और दुनिया भर से फिल्म निर्माताओं, फिल्म प्रेमियों, छात्रों और प्रतिनिधियों की एक असाधारण सभा ने 3 दिवसीय 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को खास बनाया। इसी के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह में फैशन शो ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, अरुण कोइमर हार्डियन, एम्बेसडर ऑफ सुरीनाम, अंकित नागपाल, सोमेन दत्ता आदि मौजूद रहे। फैशन शो की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा कि फैशन के रुझान अक्सर तेजी से बदलते हैं और फैशन अक्सर इन प्रवृत्तियों के नवीनतम संस्करण का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फैशन एक आर्ट है। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिजाइनर को भी अवार्ड दिया। बता दें कि बॉलीवुड थीम पर आधारित फैशन शो, जिसने रंगीन दुनिया और इसके अद्भुत ग्लैमर को समर्पित, इस फैशन शो ने 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल में 4 चांद लगा। Been here again at the Marwa Film Studio, and first let me say I do appreciate I've been given this honor. The name is Abdul Dewale Mohammed, and I have been used to coming to India since 2018. I mean, 2016. India is my second home. I'm based in England, and what actually brought me to India was the Indian Society for Technical Education. And in Chennai, Vellore Institute of Engineering Education, we had an MOU to do what Dr. Marwa has so much passion for. And that is, I came here to organize the first World Film Music Arts Award Festival. And I started an MOU with IST at Chennai, where we planned my first tree in India, and I have 5 trees today. And we took into Bhopal to have this event. I'm saying this because today also has a reflection of what I'm talking about, because we're also making it history. 17 years of this is not easy, we all know that. So we must commend Dr. Marwa, the organization, and everyone that has made today very, very successful. First, when I thought about having the first World Film Music Arts Award Festival, which is never held anywhere in the world, even till today. Because when I was at the British Council about a week ago, I felt we should bring back this festival and it should be held in India. And however, we thought of where should we have it. That was in 2016. And I thought of Bhopal. If you go to the Google and ask, what's Bhopal? Bhopal is in Madhya Pradesh, if I'm right. And at that time, they have what is called, I think why I thought about that was because you see Bhopal as a city of sadness. And I said, we need to have a festival just like what your university, your organization projects, that we should have what we call the first World Film Music at Bhopal so that we can turn it to a city of happiness. And at that time, it was the only state in India that has what you call the Ministry of Happiness. And apparently the current Minister of Agriculture of this current government, which is still under Prime Minister Modi, is the same chief minister at that time. And like I said, it was only one that had the Ministry of Happiness in the whole of India. So not to cut your time off, we will be seeing more because the media, you play a very important role in society. But what I would say is that, please let's reflect on positive things in our world because our world is fractured. We have a lot of concern. So we that are artists, we should try whatever we put either in our films, in other arts, let us look at positive things because our young people now today, they seem to look at things that are not really, that's why we say morals no longer in our education and all this. And I tell you, we know you're also a reflection of society, but we need to change because we need to change the world. The world is not getting the way it should be, but with your support, reflecting on positive things, we can at least create models. And remember, when you media, you promote celebrities, you forget to tell young people that they are all models. When you become a celebrity, you realize that you are a product. But most of our young people want to be a celebrity without knowing what it is. So please, let's create good models for our young people and make our world better.
Thank you very much, and God bless you all. The event was super amazing. I can see the hard work the students have done. We can see in each sequences what hard work each one of here has done. So amazing work. Thank you. Good evening, I'm Dr. Neha Kapoor. I am very honored by the ART team, Mr. Marwa, Mr. Ankit Nagpal, to honor me with the show. I'm thrilled how designs and fashion can comprehend with this artistic styles. Every year, again, I want to be the part of the show. Thank you. What a pleasure to be here, my dear friends. This is the last event of this festival. We are very happy, very excited. The festival has done extremely well. We had people from all over India and abroad. We have touched almost 100 countries as far as entries are concerned. 77 countries we are representing ourselves in India, and more than 19 ambassadors they have come in this festival. We have touched all the 26 states and 9 union territories of India. The last event was a super duper hit. The fashion show, which was absolutely based on Bollywood music, has done extremely well. People were enjoying. They were relishing, I must say, the whole affair. Every event has gone very well. We have been very well appreciated by everyone from India and abroad. And I'm very happy that the sole purpose of conducting this kind of a festival is to bring in love, peace, and unity through art and culture. And I feel that we have done the job. सर 3 दिन का फेस्टिवल रहा, बहुत अच्छा रहा. ऐसा कोई खास पल आप शेयर करना चाहें 3 दिनों का स्पेशल कोई जो है? तीनों दिन ही खास रहे, तीनों दिन में ही खास खास प्रोग्राम रहे. बहुत सारी नई चीज़ें सुनने, देखने और करने को मिली. आदरणीय राष्ट्रपति के ऊपर जो फिल्म है द्रौपदी मुर्मू, वो फिल्म हमारे इस फेस्टिवल का हिस्सा बनी. अभी वो फिल्म सेंसर नहीं हुई है, लेकिन फेस्टिवल को क्योंकि इजाज़त होती है ऐसी फिल्म दिखाने की, और विदेशी फिल्मों ने यहाँ पर हाहाकार मचाया. बहुत सारी फिल्में रहीं. सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जो डिसेबिलिटी का सेक्शन है फिल्मों का, जो हम लोग हर साल रखते हैं, वो इस साल भी बड़े बेहतरीन तरीके से लोगों ने उन फिल्मों को देखा. एक पर्पस हमारा फेस्टिवल का ये भी होता है कि हम लोगों को डिसेबिलिटी के लिए सेंसिटाइज कर सकें. इसके साथ साथ और भी एक बड़ी खूबसूरत बात हुई कि जो 70 गाने इलेक्शन में बने थे, उन 70 गानों को जोड़कर जो आज एक एल्बम रिलीज़ की गई, उसका भी प्रभाव बहुत बड़ा पड़ा. लोगों को ये यकीन हो रहा है कि हम लोग हर किस्म के एंटरटेनमेंट को फिल्म फेस्टिवल के साथ जोड़ सकते हैं. मार्वल स्टूडियो की तरफ से ऐसा कुछ खास संदेश आप देना चाहें? क्लोजअप तो हो गया, कोई खास संदेश आप देना चाहें? नहीं, हम लोग तो हमेशा ये संदेश देते हैं और आज भी ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस ओर चले हम मस्ती में, झुक जाए उधर अंबर भूतल, आज़ाद वतन के वाशिंदे, हर गीत हमारा है बादल. विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम. मारवा सर, इस बार आपने फिल्म फेस्टिवल में जर्नलिस्ट के भी एक सेगमेंट ऐड करवाया, क्या कुछ उस पर कहेंगे? काफ़ी बड़े जर्नलिस्ट शामिल हुए. जी, मैंने उसी को बताया. वो जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने ही ये गानों की पूरी कड़ी तैयार की थी. ये हमारे दोस्त हैं हरीश बरनवाल, और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन 70 गानों को जोड़ा है और उन गानों को यहाँ पर रिलीज़ किया है. ये भी एक नया मकाम हम लोगों ने हासिल किया है कि क्योंकि फिल्में जो हैं वो जर्नलिज्म से अलग नहीं हैं. ये संदेश हम यहाँ से देना चाहते हैं.